everyone, welcome to Takshla classes. This is Prateek Singh. We are discussing the CDS previous year questions on polity and we are discussing fundamental rights in this session, right? So the question is, which were the following cases did the Supreme Court rule that the constitutional amendments were also under Article 13 of the Constitution of India should be declared void for being inconsistent with the fundamental rights. So this was the Keshav Nanda Bharti case. You need to remember Article 13, which is also called as judicial review, is interpreted through this Article 13. Any law which is made by the parliament and is inconsistent with the, you can say, constitution or is inconsistent with the fundamental rights shall be null and void. And that was said in Keshav Nanda Bharti case. Let's see the another question now. Which of the following person is not treated as far as the availability of fundamental rights is concerned? Members of the armed forces, they are concerned. Member of the forces charged with responsibility of maintenance of public order, that is also true. Members of the persons employed in connection with the communication system setup, so this can't be there, but exactly members of the forces employed in connection with the setup for the maintenance of public order will also be there. So this is not mentioned in Article 33 of the Constitution, right, which is fundamental rights can be taken away from the these forces, right? So armed forces only the forces which have been charged with the responsibility of public order or the employed in connection with the communication system. So the answer should have been the C case. C, they will not be treated as per this. Which of the following is not true of case of Article 32 of the Constitution? Again, very important. Article 32 is very crucial from the fundamental rights topic. It gives the Supreme Court and the High Court the power to issue writs for the enforcement of fundamental rights. That is true, but not to the High Courts. High Courts ko deta Article 226. It is only for the Supreme Court. Let's see the another B question option. It is included in the part 3 of the Constitution. That is also true. Part 3 में ही fundamental rights है और वहीं पे Article 32 तक है, 12 से लेके 35. तो ये भी ठीक है. Is therefore itself a fundamental right. Yes, it is. Right to constitutional remedies ही कहा जाता है. इसको heart and soul of the Constitution भी कहा जाता है. That is what is very soul of the Indian Constitution. Dr. B.R. Ambedkar ने कहा था. An aggrieved person has no right to complain if the right is, यहाँ पे आप लिख लीजिए, if the right is not under the fundamental right. अगर किसी और लीगल राइट के केस में जा रहे हैं तो वो तब पर्सन कांट गो टू द सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 32 वहाँ पे अप्लाई नहीं होगा. तो आंसर क्या होना चाहिए? ए ऑप्शन, बिकॉज हाई कोर्ट्स आर नॉट गिवन पावर अंडर आर्टिकल 32. Let's see the another question. Under Article 32, where a fundamental right has not been violated, the Constitution of India guarantees the freedom of thought, right? Implementation of fundamental DPSP's fundamental duties, right to equality. Under Article 32, where a fundamental right has not been violated, freedom of thought, implementation of DPSP's fundamental duties, or right to equality. The question is bit, you can say, mixed. It's not a correct question, so you can take a snapshot and do check out whether the question is right or not. Next, as per the Constitution of India, writ of prohibition relates to an order issued against judicial and quasi-judicial bodies to prohibit an inferior court from proceeding in a particular case where it has no jurisdiction. That is true. Then to restrain a person from holding a public office. So 3 to bilkul galat hai because that is co warranto. So 2 should be there and only 2 is not option. So 1 and 2 should have been the answer because 3 is for sure galat. So it is issued against judicial as well as quasi-judicial bodies. So answer should have been 1 and 2. Let's see the another question. Which of the following fundamental rights as enshrined in the Constitution of India belong only to citizens? So this we have discussed 15, 16, 19, 29 and 30. So 19 is available only to the citizens. That is true. Then 21 is available also to the foreigners. 15 is also only available to the citizens. And then 16, 15, 16, 19, 4, 3 and 1. वो है हमारा ऑप्शन सी. It's a very simple question. UPSC has asked number of times between the rights which are available to the foreigners, which are available only to the citizens.
1, 3 and 4 should have been the case in this question. Is not correct with respect to Article 32. It provides remedies to citizens for enforcement of fundamental rights. That is true. It is a part of fundamental rights. That is also true. Supreme Court cannot refuse a writ petition under Article 32 on the ground of delay. That is also true. Protection under 32 also applies to enforcement, which has nothing to do with the fundamental rights. So ये क्वेश्चन बिल्कुल वही रिपीट हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं गलती क्या पूछा, नॉट करेक्ट, कैन नॉट रिफ्यूज एंड अप्लाइज टू द ऑर्डिनरी विच हैज, तो डी ऑप्शन इसका गलत है, क्योंकि आर्टिकल 32 अप्लाइज ओनली इन द केस ऑफ फंडामेंटल राइट्स, नॉट इन एनी केस इन एनी law which is being breached where article 32 can be used. So यहाँ पे लिखा nothing to do with fundamental rights, ऐसा चीज़ नहीं है, सिर्फ related to fundamental right article 32 can be used. Then to secure the freedom of a person upon unlawful arrest, that is habeas corpus. Let's see the another question. Constitutional provisions and the laws for the protection of rights of the scheduled caste in India, article 17 के तहत. Then protection of civil rights act भी है, scheduled caste and scheduled tribes prevention of atrocities act. 1, 2 and 3 सभी को करेंगे हम इसका ऑप्शन. Next, right to form associations and unions is a right granted to everybody. Then to freedom granted to citizens only, the equality before law or to life. बिल्कुल ये आर्टिकल 19 है, और वो आर्टिकल 19 फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम के तहत आता है, तो सिटीजन्स ओनली, क्योंकि 19 सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स के पास अवेलेबल है. तो आंसर क्या होना चाहिए, बी ऑप्शन. ये 2016 में पूछा गया, थोड़ा सा ट्विस्टेड है, अच्छा क्वेश्चन है. अगर आप देखिए कि राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस, बिल्कुल आप अगर याद है राइट्स आपको प्रॉपरली, तो आप इजीली कह सकते हो, तो वो 19 में है. और टू फ्रीडम ग्रांटेड सिर्फ सिटीजन्स के पास है, ये भी चीज़ उसने चेक कर ली. नेक्स्ट आ जाइए, रिगार्डिंग आर्टिकल 21 इज वायलेटेड व्हेन द अंडर ट्रायल प्रिजनर्स आर डिटेन्ड अंडर जुडिशियल कस्टडी फॉर एन इंडेफिनिट टाइम. बिल्कुल इंडेफिनिट टाइम के लिए अगर किया गया तो वो होगा पहला स्टेटमेंट ठीक. राइट टू लाइफ इज़ वन ऑफ द बेसिक ह्यूमन राइट्स, नॉट इवन द स्टेट हैज़ द अथॉरिटी टू वायलेट द that right. That is also true. The right of a woman to take reproductive choice is not a dimension of personal liberty. That is wrong. 1 and 2 should have been the answer. So that was a question on right to life, article 21. Next, with regard to right to education, free and compulsory education should be provided to all children of the age 6 to 14. That is true. देखिए दोस्त, नेक्स्ट बी ऑप्शन देखिए, द imperative of provision of right to education act is that schools must have qualified teachers and competent in basic infrastructure. ये तो नहीं है. There should be quality education without any discrimination on the basis of economic, social and political cultural background. तो इसका आंसर सी ऑप्शन होना चाहिए. 1 and 3 should have been the answer in this case. That is right to education, which was added by 86th amendment. याद रखिएगा amendment भी, और article 21A के तहत आया था right to education as a fundamental right. Which one of the following statements relate to protection against arrest and detention of the individuals? No person who is arrested shall be detained in custody without being informed of the ground for such. That is true under article 22. Shall be denied the right to consult and be defended by a legal. Bilkul, he has a right to talk to his legal practitioner, that is there. Then every person who is arrested and detained in a custody shall be produced within a 1 week. That is wrong. It should be 24 hours. Within 24 hours he is to be presented. तो इसमें पूछा नॉट करेक्ट, तो सी ऑप्शन बिल्कुल गलत है. ये बाकी आप याद रखिएगा. आर्टिकल 20 राइट टू प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट इज नॉट अवेलेबल टू अ पर्सन इन जेल परसुएंट टू जुडिशियल ऑर्डर. बिल्कुल ठीक दोस्त, आंसर होना चाहिए था सी ऑप्शन, क्योंकि 1 वीक नहीं 24 आवर्स है इसका. नेक्स्ट देखिए आर्टिकल 30. द फंडामेंटल राइट्स गारंटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन बी सस्पेंडेड ओनली बाय
प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, एक्ट पास बाय द पार्लियामेंट, अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इमरजेंसी के टाइम ही सिर्फ फंडामेंटल राइट सस्पेंड होते हैं, लेकिन उसमें ये भी याद रखें 20 एंड 21 कैन नेवर बी सस्पेंडेड। अब देखें अगला क्वेश्चन। आर्टिकल 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंक्लूड्स व्हाट? 21 जो कि राइट टू लाइफ है, राइट ऑफ ट्रांसजेंडर इज देयर, राइट ऑफ क्रेनियोपोगस ट्विंस, बिल जिनके सिर जुड़े होते हैं वो भी है, राइट ऑफ मेंटली रिटार्डेड वुमेन टू बेयर अ चाइल्ड, दैट इज आल्सो देयर। सो 1 and 2 and 3, all of these rights are there in under article 21. So please understand article 21 को सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी डिसीजंस दिए और वो सारे आपको पता होने चाहिए। जैसे राइट टू प्राइवेसी ऑल्सो कम्स अंडर आर्टिकल 21, राइट टू हैव क्लीन एयर इज ऑल्सो अंडर आर्टिकल 21, राइट टू हैव फूड इज ऑल्सो अंडर आर्टिकल 21। तो ये आपके प्रॉपर लक्ष्मीकांत में एक लिस्ट भी दे रखा है, डू चेक आउट दैट लिस्ट, updated list where Supreme Court has held what comes under right to life. Let's see the another question now. A writ issued to secure the release of a person found to be detained illegally is, बहुत ही सिंपल, बार बार यही चीज पूछ रहा है, habeas corpus. The fundamental rights granted in the Constitution of India can be suspended only by proclamation of emergency. ये भी हमने देखा क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए इज कंसर्न, ये भी हमने क्वेश्चन देख लिया। मेंबर्स ऑफ द कम्युनिकेशंस विद सेटअप इन द कंट्री, इस चीज़ में नहीं, आर्म्ड फोर्सेस या जो भी रिस्पॉन्सिबल ऑफ फोर्सेस फॉर मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, उन सभी पे ये लगता है। इट इज़ वेरी सोल, ये भी हम देख चुके हैं। इज़ नॉट बीन वायलेटेड, हैज़ नॉट बीन वायलेटेड फ्रीडम ऑफ थॉट, राइट टू इक्वलिटी, ये क्वेश्चन गलत था। अगला क्वेश्चन, ओनली टू द सिटीजन 15, 16 और 19, ये भी हमने क्वेश्चन देख लिया। unlawful arrest we have seen, then we have seen this question also, so we have seen all of these questions which we have discussed, so that's all for the fundamental rights। ये क्वेश्चन अभी तक नहीं देखा तो देखिए आर्टिकल 40 क्वेश्चन 46, which one of the following statements with respect relating to cultural and educational rights in India is not correct? Every section of the citizens has the right to conserve its language, script and culture. That is true. No citizen shall be denied admission into any education institution maintained by state on receiving aid out of state funds on grounds of the race. ये भी बिल्कुल ठीक है। State shall in granting aid to educational institutions discriminate against any on the ground that it is under the management of majority. State बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं करेगा इस चीज़ के रिलेटेड। लास्ट देख लेते हैं, ऑल मिनोरिटीज़ वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज शैल हैव द राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ये भी बिल्कुल ठीक है। 29 में यही दे रखा है। इनको स्क्रिप्ट बचाने का, कल्चर बचाने का अधिकार है, वो हमने ए में देखा। 30 में देखा कि इनको इंस्टीट्यूशंस एस्टैब्लिश करने का अधिकार है, मदरसा स्कूल्स खोलने का अधिकार है, या गुरुकुल स्कूल जो हिंदूज खोल सकते हैं, खालसा स्कूल जो सब सिख खोल सकते हैं, दे कैन ओपन। सो दिस इज ऑल्सो ट्रू। So the wrong statement is C option. Why so? Because यहाँ पे बात करें स्टेट में आपके साथ डिस्क्रिमिनेट कर सकता है if it is being ruled by majority. No, it is not there. So I hope everybody is clear about this thing. C option was wrong here. Fundamental rights granted in the Constitution of India can be suspended. ये हम पहले भी देख चुके हैं। So ये थे हमारे कुछ questions जो fundamental rights पे UPSC ने पूछे हैं आपके CDS के पेपर में। I hope you got a clarity आपको क्या क्या चीज़ें फंडामेंटल राइट्स में देखना, आपको आर्टिकल्स ज़रूर याद रखने। देन यू नीड टू रिमेंबर ऑल दीज आर्टिकल्स लाइक राइट टू इक्वलिटी 14 to 18 में है। देन आर्टिकल राइट टू फ्रीडम है हमारा 19 से 22, चेक आउट ऑल 19, 20, 21, 22, वेरी इंपॉर्टेंट। देन 23, 24 राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन। देन 25 to 28 इज़ राइट टू रिलीजन। 29, 30 इज़ कल्चरल एंड एजुकेशन राइट्स। और आर्टिकल 32 हमारा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। 31 जो रिपील हो चुका है उस पर मत फोकस ज़्यादा कीजिए, इनको अच्छे से कीजिए। फिर इनमें से आपने ये भी देखने कौन से फॉरेनर्स के पास अवेलेबल है, कौन से नहीं है। जो सिर्फ इंडियंस के पास अवेलेबल है 15, 16, 19, 20, 19, 29, 30, याद रखिएगा ये। So this way you can easily answer any question on fundamental rights, and then we have also discussed about the writ questions.
So I hope everybody is very clear about these questions now, and you can easily answer the questions in your paper. So that's all for today. Thank you. Wish you all the best. And if you're really liking our sessions, please do